Jazzy Joe's Vinyl Adventures. Okay, give me a beat. Watch this. Hi everyone, welcome to this new web series and fourth episode of Jazzy Joe's Vinyl Adventures, the web series where I talk to various collectors, sellers and producers of vinyl records in India. In every episode we will feature different lovers and promoters of vinyl records along with my tips about collecting records. This time we are talking to some of the passionate record collectors in the New Delhi area and asking them about their love and passion for vinyl, and it was difficult to do without visiting them. So I took a small tour to talk to them. Ladies and gentlemen, join me on my tour as I chat with these vinyl lovers and collectors about their love for vinyl. Hi everyone. Yes, it's a bright sunny day and we are on our way on the tour of Delhi's LP record collectors, vinyl collectors, and I'm hoping to meet at least 3-4 of them today, and we are going to an area called Mayur Vihar, phase 1, to meet our first collector. So, see you there. This collector is someone I've known since a long time. I've learned a lot from him, and he's known for collecting the first releases of vinyl records, Bollywood vinyl records, the Angel records and the Orient records. I think he's the only collector who has every issue of them, all of them, that were made in India. I am talking about my friend Jay Singh. Hi Jay. Hi Joe. I'm fine. Good to see you. Yeah, same here Joe. Yeah. Especially it's a good day. It's a sunny day. Absolutely. In spite being a bit cold. Yes. It's always sunny with you. So tell me, Jay, when did this bug bite you? Where did you see your first record? Was it your father's collection? Was it at a friend's house? Was it in a shop? Your first record, if you remember which one it was and where you saw it. Right. See, I inherited a collection, I would say. My parents always had a record player. Okay. And I remember they had an, album of all those 45 RPM discs. Okay. But our player had broken by that time. And I was in class 9th. Okay. So I always, looked at the labels and wanted to play them. Okay. And then one day I borrowed a, record player from one of my friends who said that you can use it. Okay. I brought it home, played the record, and I was shocked. Okay. The sound quality was phenomenal. Okay. And then I decided that probably this is the format that I need to go into. Okay. And those were student days and I was not making too much of money, so paise to hote nahi the. How old were you? I was some 17-18 years. Oh wow, yeah. Okay. It's all about class 11th or 12th, I would say. Yeah. Somewhere in 93, 94. Okay. And then I started, saving money, buying records from the flea markets and all. Okay. And I used to play them on that record player. Oh, okay. So वो इतना अच्छा लगा मेरे को कि then I decided that I probably need to build a collection of my own. Oh wow. And then it all started. Oh wow. Yeah. And then why did you concentrate on the first releases, the Angel records, the Orient records? Why was that? Was that just a hobby, or was it something that you always wanted to do, that I should have all the first releases and not necessarily the remakes? Why was that? Or was it because of the sound quality that you found in the Angel and Orient releases? Why the first releases? Why did you concentrate on that? In those days I remember when I was doing my MBA from Calcutta. Okay. I used to buy, those represses because they were pretty cheap. Okay. You could get a repress of Mughal-e-Azam or any other soundtrack at just $50-40. Exactly. That's why I'm wondering that why did you concentrate on the expensive ones? Now, I'll not tell you. Yeah. So, one day I found this seller telling me, I will give it to you very cheap. After all, this is not the first print. Okay. And then I asked him, what is this first print all about? Okay. He said, that is very costly. You're just a student. You won't be able to afford it. Okay. वो तो 800,000 रुपए का आएगा. And that was a huge amount of money in those days. Very We're talking about 1999, 2000. Very true. And I spoke to fellow collectors and they said, the first prints are superior, sonically superior and very difficult to get. Okay. So two things, affected me. Sonically superior and very difficult to get. Yeah. If it is difficult to get, I must get it.
because that will be kind of adventurous. Okay. And if it is sonically superior, let me check it out. Yeah. And then I bought a couple of, one or two first prints, and I compared them at my place, and I found them that they were far, far ahead in the sound quality. Okay. Even though they look slightly beaten, slightly used, but they were far superior than the ones that they were new. The new repressings were no match. Yeah. And then I decided that this is the way to go. And there was a lot of excitement. You call up everybody, I need this first print, and then you wait anxiously that somebody will call कि हाँ जी मिल गया. तो वो जो excitement थी, वो भी important थी, और sound wise तो it is always far, far superior. Yeah. Do you know how many records you have now? I have not counted, but a ballpark figure. Ballpark figure will be somewhere around, considering all the 78 RPM Shellocks, LP records, EPs. The figure would touch to some 5,000 plus. I think. Yeah. Amazing. Yeah. Another thing I wanted to know, and I think everybody wanted to know. In fact, somebody told me that when you talk to Jay, you should ask this question. Okay. Is that which format do you think is sonically best? Is it the EP? Is it the LP? Is it the Shellacs that used to be there? The 45 RPMs, the 78 RPMs? According to you, because you've been a collector for such a long time, and I've also seen that you are very sonically involved, with turntables and with sound equipment. Right. So according to you, which is your favorite format in vinyl record? Well, if you talk about the best sound quality, what I noticed is that any record that spins at a higher revolution is bound to give you better sound. Okay. So by that logic, a 78 RPM should sound the best. Okay. And it does sound the best. Okay. If you listen to the songs of the early 50s and 40s, no LP record or no EP can match to the sonic quality of the 78 RPM. Okay. But then it had its own disadvantage also. Very true. Because of the shellac that was used, there is a constant hum or the noise. Yeah. So if you can't bear that, so you need a perfectly mint 78, which is kind of impossible these days. Yeah. So the next suggestion in line would be a 45 RPM SP, the single play, wherein just one track is on one side and it rotates at 45. Yeah. That is the best. That is best of the both worlds, I would say. Best of sound both worlds. Yeah. And less noise. Less noise. Yeah. And after that, obviously the LPs, the first print, they sound great. 33 and 1/3 was the speed selected by RCA, because that was the rotational speed at which they found that the fidelity was the best. Yeah. And wonderful. So now I know what to give you on your birthday. Right. 45 RPM. 45 RPM SPs. Correct. Wonderful, Jay. Yeah. Thank you so much for talking to us. Thank you, Joe. Thanks for coming. As you can see, everyone, the passion is very, very clear to see. And now we move on to our next collector. And now I'm in Noida at the house of another vinyl collector, someone who's been collecting vinyl since a long, long time. Ladies and gentlemen, my friend बॉबी मुदगल. बॉबी जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक ठाक. ठीक है. सबसे पहले बॉबी जी मुझे ये बताइए कि आपको ये शौक कैसे लगा? आपका पहला रिकॉर्ड कब था, कैसा था, आपने खरीदा, आपके वालिद साहब का रिकॉर्ड था, कैसा है? शौक का तो यह है कि मैं छोटा था तो अपनी नानी नाना के पास रहता था बचपन में. अच्छा जी. अच्छा. तो रेडियो का जमाना होता था वो. हाँ जी. नाना को रेडियो का शौक था. हाँ जी. और केसी टेप, सैगल, इन सब लोगों को सुनने वाले थे. हाँ जी. और जहाँ किशोर कुमार का गाना आते ही रेडियो बंद कर दिया करते थे. अच्छा. गाली देते थे किशोर कुमार को. अच्छा. और तारीफ भी करते थे. अच्छा. कि मैं छोटा था, मेरे को बच्चों को आवाज चिलकती थी. हाँ जी. उनको बाबा बोलता था. हाँ जी. बाबा की इसको चलने तो अच्छा गा रहा है. हाँ जी. कह रही नहीं अच्छा तो गा रहा है लेकिन मेरे को पसंद नहीं है. अच्छा. वो बच्चे का दिमाग होता है. हाँ जी. वो सोचता था यार ये कैसा बंदा है, कैसा आर्टिस्ट है जिसको गाली भी दे रहे हैं, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं. हाँ जी. तो बचपन से ये कहीं किशोर कुमार दिमाग में बैठा हुआ था. हाँ जी. बड़े हुए धीरे धीरे पॉकेट मनी थोड़ा ज्यादा मिलना शुरू हुआ. अच्छा. तो कैसेट्स में रिकॉर्डिंग किशोर कुमार के गाने. पहला तो यही में था कि किशोर कुमार के सारे गाने होने चाहिए. हाँ उसका कलेक्शन पूरा करना है. हाँ जी. फिर धीरे धीरे वो रिकॉर्ड से रिकॉर्डिंग करवाते थे. हाँ जी. तो धीरे धीरे रिकॉर्ड्स का भी शौक लग गया. हाँ जी. तो कितने रिकॉर्ड होंगे आपके कलेक्शन में? मेरे पास ईपी और एलपीज मिलाकर जो है करीब 20,000 से अबव. अच्छा. क्या बात है, क्या बात है. और कैसे आप मेंटेन रखते हैं उन्हें? अल्फाबेटिकली रखते हैं? सब कुछ. कैसे? स्पेस थोड़ा कम है लेकिन फिर भी वो कोशिश करता हूँ कि जितना ढंग से हाँ जी हो जाए. हाँ जी. मैनेज हो जाए. अच्छा. मतलब
जानर के हिसाब से कि फिल्म के अलग और गजल के अलग, डिस्को के अलग? यह है कि किशोर कुमार वाले जो हैं वो अलग हैं, मोहन किशोर अलग हैं, आर.डी. बर्मन का जो है वो अलग है। हाँ जी, क्या बात है। और आपका ओपिनियन क्या है नए रिकॉर्ड्स में? जैसे आप जानते हैं नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, कंपनीज नए रिकॉर्ड्स निकाल रही हैं, तो आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या पुराने रिकॉर्ड्स के बराबर हैं या क्वालिटी वाइज तो नहीं है पुराने रिकॉर्ड्स के बराबर, लेकिन फिर भी अच्छी पहल है कि इस चीज़ को जिंदा रखे हुए हैं। हाँ जी। तो नए लोग भी, बहुत से लोग जो जिनको लगता था कि वो कहीं मॉल्स वगैरह में जाते हैं, हाँ जी, दिखते हैं तो वो लोग खरीदते हैं, वो भी लोग भी जुड़ रहे हैं इस चीज़ से। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और आपको फ्यूचर क्या लगता है वाइनल का? इंडिया में क्या फ्यूचर है? क्या ये पहले की तरह वापस आ पाएगा या आपको लगता है कि पहले थोड़ा बहुत रहेगा? नहीं, पहले की तरह तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिंदा रहेगा ये। हाँ जी, चलता रहेगा। हाँ जी। अभी करीब 15-20 साल तो मेरे को नहीं लगता कहीं कुछ होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। जब तक हमारी उम्र के लोग हाँ जी बचे हुए हैं तो तब तक इसको संभाल कर रखेंगे। हाँ जी। तो आपको लगता है कि नई जनरेशन इसको उस तरह से नहीं चाहेगी जैसे पुराने लोग चाहते थे? नई जनरेशन भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, उतना मतलब वो रैपिड नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ जी। जैसे बीच में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ जी, थोड़ी सी होप तो है। हाँ जी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो हमारे रेगुलर्स ने पूछा है आपसे। वो कह रहे थे हमको कि सबसे पूछना ये चीज कि आप कह रहे हो आपके पास 20,000 के करीब रिकॉर्ड्स हैं सब मिला के, है ना, उससे ज्यादा। तो आपका बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि अगर मैंने तो पूछा जाए मैं भी जवाब ठीक से नहीं दे पाऊंगा। आपका फेवरेट रिकॉर्ड कौन सा है इनमें से? जैसे आप किशोर कह रहे हैं तो किशोर कुमार का कोई फेवरेट है या रिकॉर्ड? तो कोई ऐसा रिकॉर्ड जो मतलब किसी भी कारण फेवरेट हो, कलाकार की वजह से, संगीत की वजह से, या आपका पहला रिकॉर्ड हो जो आप अपने पॉकेट मनी से खरीदे हो, कोई यादगार हो? पहला रिकॉर्ड तो मैंने खरीदा था, मेरे को याद है अच्छी तरह से, सिस्कियां एक मूवी थी। हाँ जी, सिस्कियां, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरा पहला रिकॉर्ड था। अच्छा अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि वो उसके थोड़े दिन में कैसेट्स में गाने रिकॉर्ड करवाता था। हाँ जी। तो उसके थोड़े दिन पहले ही मैंने कैसेट्स में रिकॉर्डिंग करवाई थी, और वो अच्छी खासी उसकी प्राइस मैंने दी थी। हाँ जी। और चोर बाजार लगा हाँ जी, हाँ जी, लाल किले के पीछे। हाँ जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट डे संडे था, मैं वहाँ गया तो 20 रुपए में मेरे को रिकॉर्ड मिल गया। अच्छा। सिस्कियां का। अच्छा। और 2 दिन पहले मैंने 200 रुपए की उसकी रिकॉर्डिंग करवाई थी। ओह अच्छा। मेरे को लगा यार ये बढ़िया है, 20 रुपए में रिकॉर्ड भी अपना, गाने भी अपने। हाँ जी। तो वहाँ से बस धीरे धीरे लाइन में आ गया। और आप कलेक्शन अपना किस हिसाब से करते हैं? अपने पसंद, जो गाने पसंद है उनको कलेक्ट करते हैं, या जैसे हमारे कुछ मित्र हैं वो एंजल ओडियन कलेक्ट करते हैं, कुछ मित्र हैं वो जानर के हिसाब से कि नहीं मुझे तो डिस्को ही अच्छा लगता है। तो आपका चॉइस करने का क्या तरीका है? चॉइस करने का तरीका तो यह है कि हिंदुस्तान में जितने रिकॉर्ड्स बने हैं सारे मेरे को चाहिए। अच्छा क्या बात है, बहुत बना है सब अपने पास होना चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको पूरा सागर चाहिए। नहीं, मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपको एक एक करके सारे रिकॉर्ड मिले। अभी मिले, अभी कुछ कमी है? नहीं, सारे एक जगह रख दोगे तब भी सारे पूरे नहीं होंगे। अच्छा अच्छा। वो है कि चल रहा है, टाइम पास होता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। आदमी बिजी रहता है, खुद परेशान रहता है, किसी और को परेशान नहीं करता। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर खुशी हुई। एज यू सॉ, दिस इज माय फ्रेंड बॉबी मुदगल. He's been a collector since a long time, and now we move on to our next collector. And now I'm at Patel Nagar with another great collector, someone I know since a long time. I've learned a lot from him too, and I've got a few records from him too for my collection. I'd like to introduce all of you to my great friend, Mr. Surendra Khurana. Hello, namaskar ji. Namaskar to all the music lovers. Khurana ji, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm fine, going good. Seeing you after a long time. Yes. We have all been busy with a few viruses here and there. Yeah. Everybody was stuck up. Yeah. In the past few months. Yes. That is true. Okay, I'd like to ask you, for the benefit of everybody, when did you start your collection of vinyl? Sir, I started it around 93-94. Oh, I see. I got a clue from one of more known persons that you can get these songs of Kishore Kumar recorded at Meena Bazaar. Okay. So that was the opening for me. Okay. I got all his records, all his songs recorded from there. Okay. Those days cassettes were there. Yeah. So I got
them all in cassettes. Yeah. I still have those songs in cassettes. Okay. And what about records? What about vinyl? When did that happen? When was your first record in your collection? See, I used to go with my father also. Okay. Whenever I went to Chandni Chowk, there was Okay. Surinder Electronics in front of Seesgan Sahib. So Yes, I, yes. I used to collect 1 or 2 records from there. Yes. I had a player Yes. with me. But it all began in around 2001 Okay. with one of my friend. He was having a shop at Karol Bagh. Okay. So I used to frequent him. So Okay. he introduced me to these vinyls. Okay. So that really sparked me off. Okay. And I know, and everybody in the vinyl world in India knows that you are a great Kishore Kumar fan. Yes, that is true. That is true. So why Kishore Kumar? Why not somebody else? Why Kishore Kumar? I can't be very precise, but I would say that this was love at first sight. Okay. Because his song Musafiru Yaro struck me. Okay. And then after that it was only Kishore Kumar, and I don't even remember why it was Kishore Kumar. Now it is Kishore Kumar only. Okay. Yeah. Wonderful. And I've heard it's not only records, but you have many items, related to Kishore Kumar. Yes, Is that sir. true? Yes, sir. Yeah, that is very true. I've got something very unique. See, Okay. I have got this Sagar booklet. Oh, okay. There was the movie Sagar. The movie Sagar. There was a song by Kishore Kumar, solo song Sagar Kinare, Yes. which never saw the light of the day, Okay. which was never released Okay. either in record, CD or anywhere. Okay. See, I have got this one. You can see this song number 8. This was sung by Kishore Kumar solo. Okay. Wow. That's unique. Yes, that is very, very unique. Yeah. Everybody's trying to get this song, but unfortunately nobody has it. Nobody had it. And And see, this is a record. this is a record. This is the only one movie apart from his own production house, KS Films, for which he gave the music. Okay. Zameen Asman. He gave the soundtrack. He gave the music for this movie Okay. apart from his own banner, KS Films. Okay. Wow. And I see you have another record there. Yes, sir. This one is his most sought after record, Okay. which every Kishore lover is looking to get this record into his possession. Okay. I think this is very unique. Okay. And do you think that you have all the songs, all the records that you wanted in your collection, or is the journey still continuing? Is there still something Journey left to collect? I would say Mr. Jazzy's journey is still continuing because there are some unreleased songs which Okay. I am looking after. Okay. I have got few of his unreleased songs also. Okay. See, he has sung around 2800 to 2850 songs, Okay. and I must be having around 2750 of Oh, his songs, okay. or 10-20 over here and there. Okay, so 98% of his songs. 95%, I would say, Yeah. that 95% of his songs I am having. Okay. I'm only looking after those unreleased songs. Okay. Few of the songs are there in the movies Okay. for which the prints are not available, just like Cham Chama Cham. Okay. I have come to know that its prints has been destroyed Oh, okay. in fire or God knows. Okay. But as a Kishore lover, we are still longing for it. Okay. But I don't see any ray of hope in getting these songs for which no soundtrack is available Oh, okay. except for the movie. Okay. I hope you find these songs. Thank you very much. soon. I also hoping so. And I know you since a long time, so I know that not only your collection, not only as a Kishore fan, you are helping other people also complete their collection now and then, and you also have another house meant for records, Yes. storing records Yes, only. Yes. I have. So that speaks about your passion. So can you Yes. tell us about that, please? Yes, sir. I have got just a house nearby. Where Okay. a room has been dedicated to the records and CDs. Okay. One full room. It has Okay. been Okay. for the Kishore Kumar only. For Kishore Kumar only. Okay. Yes. So do you intend to make a museum or something later on sometime? You never know. Okay. You never know. Okay. Might be the case, Okay. but you never know. Wonderful. And what is the future you feel for vinyl records in India? Do you think Future it is there? Yes, it is there. Future is Do bright. you think the young because generation will get attracted to it? they will definitely, because the companies are coming up with the vinyls. Very now. true. Very true. So That, that is really good Yeah. for all the music lovers and for new generations. yeah. Even new movie soundtracks are not coming on vinyl. Vinyl. You know? And what about the price factor? Do you think it will
make a difference or not? Price factor, I would say price factor is not that pocket friendly. Okay. 2000 is too much of a price Okay. for a youngster to pay. Okay. Very true. So I would say that the companies who are issuing these records must look into this pocket friendly issue, Okay. so that a music lover doesn't hesitate Yeah. to buy these records. Yeah. But Very- he will buy only if his pocket allows. Yeah. Very true. I agree with you. Yeah. Yes, totally. I will support you. Thank you. Thank you. For Thank my- you. No, that is the utmost factor. They must Yes. look into it. Yeah. How will they get a wider audience? Very true. Very true. Unless and until they are pocket friendly, they are not going to go into every nook and corner. Very true. So the company must look into it. If they are importing it, they must look into it of establishing their own plant over here in India, so that overseas costs are not Taken incurred care on of. those. Yeah. They can be cut off. Yeah. So that will definitely reduce the price, Yeah. and that will be good for all the music lovers all over. Very true. So that is my friend Surendra Khurana ji, a big Kishore Kumar enthusiast, Thank you. a big vinyl record collector. Thank you. Thank you, Surendra My ji. pleasure, Thank you Mr. so much. Jazzy. My pleasure, Yeah. Jazzy ji. So It's nice a- of you. Yeah, it's a So pleasure. nice of you for coming over here and it's giving me always- a chance. Giving me a chance. It's always a pleasure. Thanks a lot. And now we move on to our next vinyl collector. Right, guys, here we are at our next venue. This is Saibabad or Ghaziabad in UP, India. And I am here to meet a very dear friend, a huge collector of vinyl, as you can see behind me. You know, I'm sure you can see the great amount of vinyl. Ladies and gentlemen, I am very happy and proud to present my dear friend, Mr. Ranjit Singh. Ranjit ji, how are you? Fine, sir. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Good to see you. Same here, sir. Yeah, it's been quite some time, Sir. you know, and especially at your place, you know, I'm sure all of my friends would be very very happy to see all this. Thanks for coming, sir. Thanks. Yeah, yeah, very very nicely placed. And like I ask everybody, हाँ जी. I would like to ask you, आप ये बताइए रंजीत जी कि आपका पहला रिकॉर्ड कौन सा था? What was the first record that you got introduced to in your life? Was it at your father's home? Was it at your friend's place? Was it in the market? पहला रिकॉर्ड आपका कौन सा था? अगर नाम ना हो तो कहाँ आपको? नहीं सर, मुझे याद है आज. आपको याद है? क्या बात हाँ है, जी, सर. वाह वाह वाह. सर फर्स्ट रिकॉर्ड था दिले नादान खयाम का म्यूजिक. अच्छा, यस यस यस, दिल नादान. उस टाइम कैसेट्स इकट्ठी करते थे सर. अच्छा. तो कैसेट्स में उसका गाना था चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा. एक बार हाँ बिल्कुल. तो वो कैसेट उसकी आती नहीं थी सर. अच्छा. तो मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि उसका आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, उससे आप रिकॉर्डिंग करवा लो. उससे रिकॉर्डिंग करवा लो. हाँ जी. तो मेरा फ्रेंड एक रिकॉर्डिंग शॉप पे ले गया मुझे. हाँ जी. तो वहां पे जब मैंने रिकॉर्ड्स देखे, हाँ जी. तो बस वहीं से ही हम रिकॉर्ड कलेक्शन करने की दिमाग में कीड़ा उठ गया था. अच्छा. और वहीं से बस रिकॉर्ड चालू करते 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 यहाँ तक पहुंच गए हैं सर. क्या बात है. और उम्र क्या होगी आपकी उस टाइम? उस टाइम तो उम्र मेरी थी सर 20 इयर्स बैक की बात है सर. अच्छा अच्छा अच्छा. 25 इयर्स का था उस. अच्छा अच्छा. क्या बात है, क्या बात है. लेकिन फर्स्ट कैसेट्स मैंने जो खरीदी थी वो तेजाब मूवी की खरीदी थी. 1989 में शायद खरीदी थी. अच्छा अच्छा. तेजाब और गंगा जमुना सरस्वती. हाँ और जी. साथ में HMV के कुछ पुराने कैसेट्स खरीदे थे. अच्छा अच्छा. और पहला रिकॉर्ड कौन सा खरीदा? दिले आपने? नादान का था. अच्छा, दिले नादान का ही वहीं से ही रिकॉर्ड खरीदने शुरू करे थे. अच्छा अच्छा. तो आपने रिकॉर्ड नहीं करवाया, आपने रिकॉर्ड ही खरीदा? रिकॉर्ड ही खरीद लिया. उससे पूछा रिकॉर्ड कितने का है, वो बोला 200 रुपए का. हाँ जी. हमने कहा इसको चलाने के रिकॉर्ड प्लेयर, कह रहा वो 2500 रुपए का. अच्छा. हमने कहा चलो ठीक है. वो कह रहा लेकिन इसके लिए कार्ट्रिज भी लेनी होगी. हाँ जी. वो भी 2500 रुपए की है. ओ अच्छा. एक एम्पलीफायर लेना होगा जिससे फोनो चलेगा, वो 4000 रुपए का है. अच्छा. और एक स्पीकर लेना होगा जो 5000 रुपए का है. अच्छा. तो एक गाना कितना महंगा पड़ गया ये देख लो आप. हाँ सही बात है. और इतना बजट. हाँ. और इतना धीरे धीरे फिर ये कलेक्शन आगे बढ़ते रहे सर. हाँ जी हाँ जी. तो इतना बजट उस टाइम था आपका? हाँ बजट था. अच्छा अच्छा. बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हाँ जी सर. बहुत बढ़िया. आपके पास अगर आपको ध्यान हो कि कितना का कलेक्शन है, कितने रिकॉर्ड्स का कलेक्शन अभी होगा आपके सर पास? मेरे पास 4000 के करीब तो LP हैं. अच्छा जी. और 5000 EPSP. अच्छा. और 3000 के अबाउट 78 RPM है. अच्छा अच्छा. और 5000 CDs हैं. अच्छा. क्या बात है. वाह वाह वाह. थैंक यू. और आपका फेवरेट फॉर्मेट इनमें से? 78 सर. 78. नो डाउट 78 सर. अच्छा. क्यों?
सर जो उसमें वोकल्स हैं, जो वोकल्स का उसमें डेप्थ है, जो वोकल्स में नेचुरलिटी है, वो किसी और फॉर्मेट में नहीं है सर। अच्छा, तो मेरे को तो सबसे ज्यादा बढ़िया 70-80 अच्छे लगते हैं और मैं ज्यादातर 70-80 सुनता हूँ सर। अच्छा, पहले स्टार्टिंग कैसेट से हुई, कैसेट से रिकॉर्ड में चले गए, सीडीज में चले गए, लेकिन जो 78 से जो लगाव है आज भी सर 78 से लगाव नहीं छूटा। अच्छा, धीरे धीरे पता लगा कि 78 मेन मास्टर 78 है सर। हाँ जी। तो जैसे पहले स्टार्टिंग में बने हुए हैं तो अपने रिकॉर्ड, उस टाइम का म्यूजिक भी अब इतना अच्छा लगता है। हाँ जी। तो 70-80 सुनने लग गए सर धीरे धीरे। 70-80 मेरा फेवरेट फॉर्मेट है सर। क्या बात है। और रिकॉर्ड प्लेयर है जैसे सर, आपको मैं बताऊं, हाँ जी, अपने लिए टाइम मशीन है सर। अच्छा कि उस टाइम में हमें ले जाता है 1948 में। आप जा रहे हो, सहगल साहब गा रहे हैं, हाँ जी, नौशाद म्यूजिक दे रहे हैं, हाँ जी, और उनका जो उस टाइम की जो टाइम को कैप्चर उस रिकॉर्ड ने जो हमारे लिए कर लिया है, हाँ जी, वो आज भी हम प्ले करते हैं तो उसी टाइम में फिर चले जाते हैं। क्या बात है। और क्या आप रोज सुनते हो अपने हाँ कलेक्शन को? ऑलमोस्ट रोज सुनता हूँ। अच्छा, कितना टाइम दे पाते हैं? आई नो आप बड़े बिजी हैं, बट 1 घंटा तो सर सुनता ही हूँ मैं। अरे क्या बात है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है, किस्मत वाले हैं आप। थैंक यू सर। एक तो कलेक्शन है, ऊपर से आप इतना टाइम दे पाते हो। थैंक यू। हाँ, तो आपको लगता है कि संगीत सुन के आपको खुशी मिलती है या शरीर जवान होता है? क्या क्या फीलिंग आती है? या हमारा हीमोग्लोबिन है या नॉस्टैल्जिया है? अच्छा, हीमोग्लोबिन है सर हमारा। अच्छा, नहीं सुनेंगे उसी दिन डाउन हो जाएगा, ये 7, 6, 5 पे आना शुरू हो जाएगा। रिकॉर्ड पे रखेंगे सुई, हाँ जी, तो फिर दोबारा 12, 13, 14 पहुंच जाएगा सर। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे लिए हीमोग्लोबिन है सर। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ओके रंजीत जी, हाँ जी सर। मेरे को एक चीज बताइए। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ, मैं जिधर देख रहा हूँ या तो कोई कैसेट दिख रही है या सीडी दिख रही है या रिकॉर्ड दिख रहा है। ये कमरा मतलब एक ड्रीम हाउस है फॉर अ म्यूजिक कलेक्टर। यू नो, कितना समय लगा होगा आपको ये सब इकट्ठा करने के लिए? सर कैसेट्स तो मैं 1989 से कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये रूम 10 साल पहले बनाया था सर मैंने। अच्छा, और रिकॉर्ड्स जैसे 2000 में मैंने कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे। हाँ जी। तो 10 साल तो कैसेट्स पहले मैं करता रहा, उसके बाद फिर 2000 से लेके अभी तक कैसेट्स, विनाइल, सीडी, 78 सब मतलब 2000 से स्टार्ट कर रहा हूँ सर मैं। करीब 30 साल की मेहनत है आपकी। हाँ सर, कह सकते हैं। लेकिन विनाइल में 20 साल हो गए सर। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। और विनाइल जैसे आप देख रहे हो कि अभी नए नए रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं इंडिया में। हाँ जी, हाँ जी, है ना, नए साउंड ट्रैक्स के, पुरानों के दोबारा बन रहे हैं। यू नो, तो आपको क्या लगता है कि विनाइल का फ्यूचर क्या है इंडिया में? है फ्यूचर, नहीं है? और म्यूजिक का क्या फ्यूचर है इंडिया में? सर विनाइल का फ्यूचर तो आगे रहेगा ही, हमेशा ही रहेगा। और जो पुरानी फर्स्ट प्रेसिंग्स हैं, हाँ जी, वो तो और रेयर और वैल्यूएबल होती जाएंगी। आगे प्रेसिंग्स आती रहेंगी, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जैसे हम और आप जैसे फर्स्ट प्रेसिंग्स जो लेने वाले हैं, हाँ जी, ये हमेशा फर्स्ट प्रेसिंग्स के पीछे ही रहेंगे। हाँ जी। और आगे आगे आप देखो, जैसे विनाइल अभी थोड़ा बहुत आ रहे हैं, सीडीज ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं सर। हाँ जी। फ्यूचर बड़ा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर इसका। अच्छा। और हम जैसे बंदों के लिए ऑनलाइन सुनना, हाँ जी, या MP3 सुनना, वो ऐसे ही है जैसे शेर को घास खिला देनी। हाँ जी क्या बात है, बिल्कुल तो सर बस आगे तो म्यूजिक का फ्यूचर मुझे कुछ खतरनाक सा ही लग रहा है सर। कुछ समझ नहीं आ रही आगे क्या होगा। अच्छा। लेकिन कुछ लोग हैं जो विनाइल वगैरह बना रहे हैं आगे, अच्छा है, वो लोग करेंगे, बढ़िया रहेगा। आने वाले जनरेशन को भी पता लगना चाहिए भाई जो इतना म्यूजिक इतना संजोया हुआ है, एक एक मूवी के एक एक जो रिकॉर्ड है सर, उसमें एक टाइम पूरा कैप्चर हुआ है। इस आर्टिस्ट ने गाया, बिल्कुल, इस म्यूजिक डायरेक्टर ने इसमें म्यूजिक दिया, बिल्कुल टाइम कैप्सूल है उनका। हर एक चीज वो पूरा एक रिकॉर्ड में उन्होंने हमारे सामने लाके रख दिया, और हमने उसे एज एक बुक, हमारे पास वो पूरा एक लिटरेचर है उसको। आज भी हम निकालेंगे तो उस टाइम को हम दोबारा ले आएंगे अपने सामने। और कभी भी रफी साहब का एक गाना गाया हुआ कोई आज भी हम निकाल लो और उसे सुन लो, कभी रफी साहब मना नहीं करेंगे आपको सुनाने के लिए। सही बात है। आज भी उसकी ओरिजिनल सेम साउंड आज भी हमें वो रात को सुनो, सुबह सुनो। रफी साहब, आखिरी क्वेश्चन, हाँ जी सर, जो मेरे रेगुलर्स ने पूछा है और मैं सबसे पूछ रहा हूँ आज। हाँ जी सर, है ना, ये क्वेश्चन पूछा है कि एक चीज पूछना कलेक्टर से कि इतने बड़े कलेक्शन में हाँ जी आपका फेवरेट रिकॉर्ड कौन सा है? सर आई नो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सर, ये वाकई डिफिकल्ट है। हाँ जी, लेकिन मेरे लिए सहगल साहब के रिकॉर्ड से लेके, हाँ जी, और एक था टाइगर तक, अच्छा अच्छा, सारे रिकॉर्ड वैल्यूएबल है सर। एक एक गाना मेरे लिए वैल्यूएबल है सर, मैं एक का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सॉरी। क्या बात है। सो फाइनली वी हैव अ क्वेश्चन दैट ही इज फाइंडिंग इट हार्ड टू आंसर, बट टू बी वेरी फ्रैंक, इवन I would not know what to say on that question. So this was our last destination for today. The tour ends here,
and I'm sure you have heard all the collectors, in Delhi. I'm sure you can see through the words, you can see their passion, their love for the vinyl, and I'm sure you have all enjoyed this. Now it's time for my new collectors tips, vinyl tips. So let's go there. Now it's time for the collector's tip of this episode for new vinyl collectors. This time I would like to talk about how to mark and separate your collection. You can begin by using cardboard or plastic dividers to separate one group of records from another. Like this one. Like you see, this is a divider, and I have used on both sides, I have used decals, and I have categorized writing Indian movies A to Z. So you can use anything. Each of them could be marked with permanent markers or decals with different section names. For example, you can mark them with genres like this. You can also separate them as per singers, years, formats, or any way that you like. And once you've got the words on them, just place them at the beginning of the genres in your collection. Like you can place them here or here, the beginning, so that the genre starts from there. And it becomes easy to find your genres and records. Remember, a well-marked and well-planned records collection makes for a very, very enjoyable hobby. All good things must come to an end. So, we come to the end of this episode featuring some of New Delhi area's passionate record collectors. Do tune into our next episode, which will once again be talking about vinyl and the people who love them in India. I hope all of you enjoyed this episode, and if you did, please do subscribe to this channel and like and share this video so that others can appreciate vinyl too. You can also send any questions, suggestions or feedback to the email jazzyvinyl@yahoo.com. For my vinyl collector friends, happy collecting, and for everyone else watching, thanks, and hope to see you in the next episode. Till then, take care and long live the vinyl.